Assalamu alaikum, welcome back to my channel. I hope you guys have been well. Today I've got this new tutorial for you. It's a lovely sparkly eye, so I'll go through this in Urdu and in English. तो ये ट्यूटोरियल इंग्लिश में भी होगा और उर्दू में भी. यहाँ पे मैंने आईब्रोज पे एक जेल लगाई है जहाँ पे बाल थोड़े से आप स्ट्रेट कर लेते हो, मतलब आईब्रो जेल से ना. एंड देन यहाँ पे मैं अपना जो कैट वन डी का ब्राउ जेल है वो इस्तेमाल किया. So I've used the brow product which was Kat Von D. Before that I used the brow gel from Go2B, just to obviously just brush through, and then I'm going in with my P. Louise base and carving out the eyebrows. Now this was actually my second look that I did on this model. The first look I put up quite a while back now, actually it was a red one. So we'd taken her makeup off, and the second time when you take makeup off it never goes back on properly straight away, because obviously we've just used loads of products, and she was really ill, bless her, as well. She was really ill. She had such a bad cold and cough, and her eyes up by this time were, she was really tired, her eyes were watering, you know, she had a blocked nose and everything. So there were lots of things going on, and also then with this makeup I didn't actually particularly know what I wanted to do, so I've done a few changes, I'll show you. So I was just making this up as I went along. तो यहाँ पे हमने पी लुइस का प्रोडक्ट यूज़ किया है बेस से, उसको लगा दिया फ्लैट ब्रश के साथ, और फ्लफी ब्रश के साथ मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ. ये हमारा सेकंड लुक था. एंड यहाँ पे जो है ना, मेरी जो मॉडल थी इसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी. मेकअप उतार के जब दोबारा करती हूँ कभी भी मुझे वो सही लुक नहीं आता, लेकिन एक दो बाद में प्रॉब्लम्स हुई थी जो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी. एंड इसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, आंखों से भी पानी, एंड यू नो ज़ुकाम खांसी सारा कुछ बेचारी को, लेकिन फिर भी मेरे लिए बैठी रही थी. तो यहाँ पे हमने जैकलिन हिल का पैलेट यूज़ किया. एक लाइट सा ब्राउन इस्तेमाल कर रही हूँ आउटर कॉर्नर्स पे, एंड देन डार्क ब्राउन एक यूज़ करूँगी. So I'm going in using my Jacqueline Hill palette, so I'm just using a lighter brown shade on the outer corners of the eyes with a fluffy brush, blending it out, and then I'm going to go in with a slightly darker brown colour to blend that out as well. So यहाँ पे मैंने डार्क ब्राउन इस्तेमाल किया है, फ्लफी ब्रश इस्तेमाल कर रही हूँ, एंड यहाँ पे मैं इसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ आउटर कॉर्नर्स पे. अच्छा, जब मैं वीडियोस लगाती हूँ ना, ऑब्वियसली मुझे पता है कि हर लुक हर किसी को नहीं पसंद आएगा, ना ये हर चीज़ जो मैं करती हूँ सबको सही लगेगी, मतलब ना. तो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. मतलब अगर आपको सही नहीं लगता, या अगर आपको ब्लशर का कलर नहीं पसंद आया, या आई लैशेज़ नहीं पसंद है, ये वो सारा कुछ, दैट्स फाइन. जब आप लोग मेकअप करोगे तो आप अपनी पसंद की लैशेज़ लगाओ, अपनी पसंद की यू नो फाउंडेशन मैच कर लो, व्हाटएवर. लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑब्वियसली मैं जो कर रही होती हूँ, कभी भी ये नहीं बोला कि सबसे अच्छा मेकअप मैं करती हूँ, ये परफेक्ट होगा. लेकिन जो भी मिस्टेक्स होती है मैं साथ साथ आपको साथ भी दिखाती रहती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली असल में भी ऐसे होता है, कोई भी चीज़ एकदम परफेक्ट नहीं हो जाती. तो आप प्लीज़ ये ध्यान दे के वीडियो देखा करें कि ऑब्वियसली कि मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि आपकी हेल्प करने के लिए, एंड उसके बाद आपकी मर्ज़ी, अगर आपको सही कुछ नहीं लगा तो आप आगे मतलब उसको आप खुद चेंज कर लें. यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कंसीलर लगाया था, कट कर दी थी क्रीज से, कुछ रही थी, हो बाद में कुछ हो गया. तो यहाँ पे मैंने क्रीज कट की थी, एंड ये पिगमेंट लगाया था. एंड जब पिगमेंट मैं लगा रही थी मुझे पसंद नहीं आया था इसका जो शेड है ना, आई डिडंट लाइक इट, तो इसलिए मैंने आगे फिर थोड़ा सा आई मेकअप चेंज कर दिया था, तो वो आपको नज़र आएगा. लेकिन ऑब्वियसली मैंने दोनों आंखों पे फिर सेम किया था, क्योंकि फिर नहीं तो डिफरेंट हो जाएगा. So I've cut the crease, and then I went in with this pigment, which I really didn't like the look of. I hadn't used this before, so obviously on photo shoots is where I use my new product. So when I put it on, I didn't really like the way it was. So I put it on the second eye as well, but then I went in with another product to go over it. So this is what I mean, is where, you know, if I make a mistake, I kind of like just carry on. I don't panic, and then I'll just change it later on. I was just explaining also, obviously, if I put up things, I know not everyone's going to like everything I do. Not every look is going to be, you know, your kind of look, or if you don't like the lashes or the colour of blusher or whatever. But, you know, all I'm doing is showing you what I'm doing. At the end of the day, you can change it according to you when you actually go and do that makeup or whatever. So, you know, just see this as techniques and things like that. And obviously, you know, I do put a lot of hard work in these videos, and sometimes the comments can be a little bit like upsetting, really, because, you know, the whole video has been watched, you've picked up loads, but then you have to point out the one thing that maybe you didn't like, and sometimes that can make me feel a little bit like, you know, because I've never said I'm the best at what I'm doing. You know, there will be things I get wrong and things like that, but I'm just trying my best here, that's all.
Anyway, I went in with the stiller products. I went over the whole eyelid again. So basically, if you were going to recreate this look, you didn't have to cut the crease at the end of it, and you didn't have to put that pigment down. So that's what I'm trying to explain here. Is, I kind of like just chopped and changed this look a little bit. Went in with my eye cream, gone in with my sun cream, and I'm just prepping the skin now. सो आइज़ पे मैंने फिर स्टिलर का एक प्रोडक्ट लगाया था, लिक्विड प्रोडक्ट है। फिर इसके ऊपर मैं अभी बाद में ग्लिटर लगाऊंगी, फिर आइज़ फिनिश हो जाएंगी इंशाल्लाह, तो अच्छी लगेंगी। यहाँ पे थोड़ी सी मुझे पता है अजीब लग रही है। आई क्रीम लगाई है, स्किन को प्रेप कर रही हूँ अभी। थोड़ी सी सन क्रीम लगाई थी, मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। हर प्रोडक्ट के बीच आप थोड़ा सा टाइम लगाएं कि वो जज़ब हो जाए। यहाँ पे मैं अपना जो एल्फ पट्टी प्राइमर है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। So I've gone in with my elf putty primer here and really kind of like massaging it into the skin. Color correcting using the Makeup Forever Essentials palette. So this is foundation. So I'm using like the medium toned color just underneath her eyes, around the jawline, and just over the redness that she had on her skin. So foundation wise, I went in with the same palette. So I've actually used the same palette for the blusher, the foundation, and the color correcting. This is an amazing palette. I absolutely love the finish of this foundation as well. There was a complete contrast to the first look because I'd gone in really heavy with the foundation. So when I was looking at her, I was thinking, it's not really enough foundation, but I wanted to show you obviously if I just went in with one product as well. So I'm just going over the whole face with the same foundation. So this is Makeup Forever. So यहाँ पे मैंने एक ही पैलेट से फाउंडेशन भी लगाई है, कलर करेक्टिंग भी किया एंड ब्लशर भी इस्तेमाल किया है। इसी मेकअप फॉरएवर का जो पैलेट है, ये फाउंडेशन इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत अच्छी एंड नाइस फाउंडेशन है। इसका पहला लुक जो मैंने किया था, मैं बहुत हैवी मैंने किया था फाउंडेशन वगैरह के साथ। आई थिंक क्रायलॉन यूज़ की थी, पता नहीं कौन सी और फाउंडेशन। लेकिन मैंने कहा चलो इस लुक में आपको एक थोड़ा सा सिंपल बेस दिखा देती हूँ जहाँ पे एक फाउंडेशन की है, लेकिन एंड पे ये भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे मैं अपना कंसीलर इस्तेमाल कर रही हूँ जो Too Faced का है। I've gone in with my Too Faced concealer here and I'm just highlighting the under eyes here. Thank you for all the love and the support that you guys give me. I mean, your comments are amazing. There's so much positive feedback that I get here and on my Instagram page, personal messages just telling me that, obviously the videos are really helping, or they've done bridal makeup and it's really changed their game for them and things like that. Like I said, I don't know everything and I try out a lot of new things, but all I'm doing is just showing you what I do, and I'm hoping it helps out people, especially in the current climate that we're in. It's just difficult for people to obviously book courses and things like that as well, and they're very expensive. So I'm not hiding anything here. I'm just showing you what I do, how I do it, and I'm hoping that inshallah you guys, benefit from this. So I'm just contouring from the same palette as well. So you can see that these are all layers that are being added on top of each other, and then that's what actually gives you that coverage, but also changes the color of the actual foundation you've used. So when you're highlighting, contouring, it gives you that dimension. So contouring भी उसी पैलेट से किया, and then अपने एक ब्रश के साथ अभी जो हाइलाइटर है उसको मैं ब्लेंड किए जा रही हूँ। आपके जो कमेंट्स आते हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा खुशी होती है मुझे सुन के कि मैसेजेस आ रहे होते हैं यहाँ पे भी और इंस्टाग्राम पे भी कि बहुत ज़्यादा आपको मतलब मेकअप पसंद आ रहा है, अच्छा लगता है, आपने खुद ट्राई किया है, अच्छे टेक्निक्स आपको लगे हैं, मतलब आपको फ़र्क लगा है। तो इस टाइप के कमेंट्स ऑब्वियसली उससे मुझे वो और ज़्यादा होता है कि मैं आप लोगों को सारा कुछ दिखाऊँ और ज़्यादा नए नए लुक्स लेके आऊँ। तो यहाँ पे ये रियल टेक्निक्स का ब्रश है। ब्रश की वीडियो मैं अलग लेके आऊँगी ज़रूर नेक्स्ट फ्यू वीक्स में, बस थोड़ा सा टाइम दे मुझे। कुछ ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है घर पे, मैं कोशिश करती हूँ कि ये वीडियो सारी लेके आऊँ जल्दी जल्दी, लेकिन कोई ना कोई मतलब इश्यू हो जाता है जहाँ पे फिर वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। So I've just added on the cream blusher, same palette. So I'm adding all this on before I'm actually powdering. So पाउडरिंग से पहले थोड़ा सा क्रीम ब्लशर भी लगा दिया। यहाँ पे मैंने हडा ब्यूटी का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, सॉरी लोरा मैसिए का, एंड वेरी लाइटली मतलब इसको ना मैं अप्लाई कर रही हूँ। So I'm just adding on the Laura Mercier powder. So I've just used my brush to add that in. So I didn't actually do any baking here or anything like that. And now I've gone in with a MAC Studio Fix powder, which I'm actually using just to go over the contour a little bit.
You can see by my model's eyes, her eyes just look so tired, and obviously we'd already taken off a really heavy makeup look as well, so her eyes are looking really tired and they were watery, bless her, but she persevered and made sure that I could do what I needed to do. Do let me know in the comments what else you'd like to see. Everyone keeps asking me about the course. I'll just update you on that as well. Again, I've had delays. I am trying my best. I think what I'm going to have to do is say that I'm going to try and start it in September. Then that gives me a bit of a deadline that I have to work towards. So there's a certain way I like to do things. So I want to just be a little bit more prepared when I do the course for you, because I want to be quite thorough. So inshallah, I'm looking at September that I will start. So here I'm going in with the Urban Decay Heavy Metal Glitters. There's 2 shades, I've written them down, and I use this on the inner corners on the lower lash, and then I use them on top of the eyes as well, and then this finishes my eye off for me. So यहाँ पे मैंने Urban Decay का glitter यूज़ कर रही हूँ eyes के inner corners पे भी, and then इसी को ही मैं lids पे भी लगाऊंगी, and then eyes मतलब अच्छी लगेंगी इंशाल्लाह आपको भी. तो कोर्स के लिए सब मुझे पता करते रहते हैं कि कि कोर्स कब शुरू होगा. अब थोड़ी सी डिलेज हो जाती है. अब मैंने ये कोशिश की है कि सितंबर की आपको डेट दे रही हूँ, एंड इंशाल्लाह फिर मेरे पास तकरीबन 2 महीने है प्रेपरेशन करने के लिए कि मैं सही तरह आपके लिए कंटेंट अच्छा लेके आ जाऊँ. एंड देन सो इंशाल्लाह सितंबर में मैं कोशिश करूँगी कि मैं कोर्स शुरू कर लूँ, क्योंकि इन महीनों में मेरी साथ ना बुकिंग्स भी होती हैं. तो यूट्यूब भी कर रही होती हूँ और साथ मेरी वीकेंड्स भी बुकिंग्स भी हो जाती है, तो काफ़ी बिजी हो जाती हूँ. सो इंशाल्लाह सितंबर में मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना कोर्स शुरू कर दूँ और आप सबको सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊँ. तो यहाँ पे मैंने ग्लिटर लगा दिया, एज यू कैन सी, एंड यहाँ पे फाइनल टचेस कर रही हूँ, जहाँ पे थोड़ा सा आईलाइनर लगा दूँगी कि वो साफ़ हो जाए सारा कुछ. So I've done the glitter, so you can see this for me was a lot nicer than the first pigment I used. So this is how I corrected it. So basically, I've gone in now with the eyeliner, finished it off, and this was pretty much the final look. So I hope you guys have enjoyed this, and inshallah I will see you all soon. Allah Hafiz.